Hello everyone, good afternoon. I hope you are fine. Today we are starting with our next topic of your wave and oscillation. Then in last class we discussed about theirs how we can find their displacement, velocity, acceleration in our simple harmonic motion. Okay, and harmonic motion there are two types there, harmonic equation and non-harmonic function are there. Harmonic function if we can define there in form of the single function sine and cosine, then we can call it harmonic motion. And if can't express this motion in form of the single function of sine and cos, then we will call it non-harmonic motion. Okay, that we can't explain their harmonic equation, then we will call it non-harmonic function. So how we can find their displacement in your SHM, velocity and acceleration we discussed already. Displacement in your simple harmonic motion, then we can write this one with a y equal to your a sine omega t. Okay, this one our displacement. By using this one displacement, then we can find their velocity. Velocity is equal to v equal to your dy by dt, and dy by dt we can write there d by dt here a sine omega t. Okay, by differentiating this one, then we can write there a omega cos omega t. This one our velocity came. Okay, in our simple harmonic motion. So we will use this one relation here. How we can use there? So in your kinetic energy, as we know that let a particle oscillating SHM simple harmonic motion oscillate कर रहा है. So how we can find their kinetic energy? Particle oscillating SHM of mass m with v velocity. Okay, so we will find there how much velocity will be there in your simple harmonic motion. So this one we can write their kinetic energy. As we know kinetic energy is equal to your 1 by 2 mv square. Okay, so here mass of this particle is m, that is oscillating with v velocity. So we can change this one velocity by which this one. So here we can write their kinetic energy equal to your 1 by 2 m. Here v we can write there 1 by over a omega cos omega t. Okay, and here will become your square. After this one, here we can write there 1 by 2 m a omega cos omega t. This one square, then open it, then here will come square only. I hope you understood this one. So after opening this one bracket, then here we can take their square of whole term. After taking square, then here left this one. After this one, then here 1 by 2 m omega square a square cos square omega t. Further you want to solve this one, then kinetic energy in your SHM, then further you want to solve it, then cos square omega t, we can write like this one. Our kinetic energy came your 1 by 2 m omega square a square cos square omega 2. This one came. So by using trigonometry formula, that is sine square omega t plus cos square omega t equal to 1. So here we can write there cos square omega t equal to 1 minus sine square omega t. We can write like this one cos square omega t equal to in this one form. So put here why we are converting beta in sine form, because here we have done beta taken their displacement equal to y equal to a sine omega t in SHM. That's why we want to convert this sine in form of the y. Then we want to convert there here cos into sine. Okay, so here this one came your kinetic. Now after converting this one, put value of cos square omega t in equation, their first one equation. So putting here in first equation, so kinetic energy we can write there 1 by 2
m omega square a square. Put value of cos square omega t. Here we can put 1 minus sin square, because here sin square theta plus cos square theta equal to 1. So by converting this one, then we can write there 1 minus sin square omega t. So as we know about this one, displacement y equal to a sin square omega t. So using this one, then we can write there 1 by 2 m omega square a square, 1 minus sin square, we can write like this one, a sin square, wait, 1 minus sin square. So here y by a equal to your sin square omega t. ओके यहाँ से हमने इसका रिलेशन निकालना है. कहाँ से निकालना है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से फाइंड करके हमने निकाला डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इक्वल टू यर y इक्वल टू a sin ओमेगा t नॉट स्क्वायर, a y equal to a sin omega t. So sin omega t we can write there y by a. So putting here, then here we can write there y square by a square. So let further take its LCM. After taken LCM, then here keep as it is beta. This factor m omega square a square. Then we will solve this one. A square take LCM. Then here we can write there a square minus y square. Came this one. So a square to a square. This one cancel out. We can cancel this one. A square to a square. So here left here kinetic energy will be there. Kinetic energy equal to 1 by 2 m omega square here left here a square minus y square, a square minus y square. तो ये हमारे पास क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी. सो एज वी नो, then we are taking this one here, one a constant, take m omega square equal to your one constant, that we will call it wave factor, this one your k. So here wave constant we can write there omega, we can write there k by m under root. Okay, so by using this one, so kinetic energy will become equal to 1 by 2 k a square minus y square. We can write in form of this one also, we can write form in this one also. So this one your kinetic energy came, this also your kinetic energy, and this also in form of m omega, that is also kinetic energy during this simple harmonic motion. I hope you understood beta how you can find this kinetic energy. So next one here, potential energy in SHM. Then we will find their total energy in SHM, how you can find there. So potential energy, then potential energy how we can find there, as we will taking this one, let here pendulum is there, then bob is oscillating here, then apply force in this direction, this one will go in this one direction. So displacement कहाँ हो रही है? Displacement is acting in this direction, but restoring force is acting on it, that is opposite direction of the displacement. ओके, रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. सो बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई हाउ वी कैन राइट देयर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ द वर्क डन. ओके, हियर वी विल फाइंड देयर वर्क डन, हाउ मच वर्क इज डन ड्यूरिंग दिस पार्टिकल इज oscillating along the mean position, then that work done will store in form of the potential energy. Okay, so here we can write there total work done stored in form of potential energy by oscillating along mean position. Okay, so we will find there how much work done is there during this one. So during SHM, simple harmonic motion, restoring force will act on particle
which is opposite direction of displacement. अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. दिस डायरेक्शन में क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है. रिस्टोरिंग फोर्स मींस बॉडी ट्राई टू कम ऑन द अगेन मीन पोजीशन, दैट विल बी, वी विल कॉल इट रिस्टोरिंग फोर्स. एंड this one already discussed in fourth unit. What is restoring force? Restoring force क्या होता है बेटा, that is force is directly proportional to the change in the length. That length can be elongation, can be compression. Okay, जितना length में change आता है, increasing order decreasing order, उसके directly proportional होता है. So as this one will be acting in opposite direction, negative always will be there. So remove this proportional sign. तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, constant लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, K. So F equal to minus KX, this one our restoring force which is acting on any particle which is oscillating in your simple harmonic motion. Okay, we are displacing this particle in this direction. Displacement इधर हो रही है, but body try to move again on the mean position, and by which this one is after coming reach on the extreme position, it will come back on the mean position. Okay, so here we will find there now work done. अब हमने वर्क डन फाइंड करेंगे, कितना वर्क डन लगेगा. ये कह रहे हैं ना कि जितना वर्क डन होगा वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होगी. सो वर्क डन वी विल फाइंड इन फॉर्म ऑफ दिस वन फोर्स. सो हाउ वी कैन राइट देयर, स्मॉल वर्क डन वी कैन राइट देयर F dot dx. Okay, force into small displacement will be there. Displacement and force both are acting in opposite direction. That's why remove this one dot. Then here we can write there cos 180. दोनों क्या लग रहे हैं, एक दूसरे के opposite direction में लग रहे हैं. So that's why here will become -1. So F dx here, this one will be there. Okay, this one our small work done. So here we know about this one, that is equal to minus kx equal to this one. What is this? This is the restoring force. क्या है हमारे पास, dw equal to F dx, ये आ गया हमारे पास. So restoring force we can write there F equal to minus kx. क्या होता है हमारे पास, ये होता है. Okay, first we will find this one, then here we can write, so first we will find this one force, then put value of this one here, then dw equal to here dw. Now put value of force in this equation, first equation, in equation first. कहाँ रख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं. Clear? In your that kinetic energy we have taken a displacement y. That's why here also we are taking y displacement. क्या लेके चल रहे हैं हम, displacement y लेके चल रहे हैं. बेटा whatever you can take your displacement y and x, but initially we have taken your displacement y only ना. हमने starting में displacement क्या लेके चल रहे थे, y equal to a sin omega t. तो वही y की फॉर्म में ही हम इसको क्या लेके चल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को y के अलोंग ही लेके चलेंगे. यू कैन टेक योर y, यू कैन टेक योर x, योर चॉइस. So in starting we have taken y, that's why here we will take your y only, dy. So after putting here, so dw equal to here minus k by already one minus, and here left here dy. After this one, this negative positive, then here left here ky. So for the total work done, then 0 to 0 w, then here maximum displacement y we can write k outside, so here inside left here 2. After integration के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, k outside निकाल रहे तो inside integration क्या बचेगा, dy 0 to y. 0 इज अ मीन पोजीशन पे क्या डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं, तो 0 वर्क डन पे क्या रहेगा, 0 रहेगा. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट y. ओके, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, maximum displacement we can write there amplitude also. Okay, but that can displace body. यहाँ से mean position पे displace हो रही है, यहाँ से यहाँ चलना start कर रही है, तो कितना change हो रहा है, y displacement हो रही है. As it will reach on the maximum extreme position, then on this condition we can say y will be equal to a. What is a? A is the amplitude of the simple harmonic motion. कि वेव जो maximum displacement cover करेगी उसी को हम क्या कहते हैं, y कहते हैं. तो इस position के extreme position पे जाके y क्या हो जाता है, a हो जाता है. So in last in case
case you can write there y equal to a, but for the general case we will take y only. So k, after the integration, how we can take integration? 1 is there, so solve this integration. 1 we will add in this power, and same power we will write downside after the integration. So here divide by y square by 2. Like this one we can integration, so integration of dw, then here will be w. So here left here y equal to k y square by 2. क्या बचेगा? y equal to y square by you put k equal to your m omega square, w equal to your m omega square y square by 2. तो हमारे पास क्या आ गया? वर्क डन ये आ गया. दैट विल बी स्टोर इन फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. So this work done stored in potential energy, then we can write their potential energy m omega square y square. I hope you understood this one. So potential energy is this one, and your kinetic energy came this one. This our kinetic energy, this one our potential energy. Okay, so after this one potential energy, then we will find their total energy. So total energy, how we can find their total energy in our SHM? Total energy in SHM. How we can find total energy stored? Total energy stored in form of kinetic energy plus potential energy. ओके, कि हमारी जो टोटल एनर्जी स्टोर होगी एसएचएम के अंदर वो क्या होगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इन एसएचएम. Okay, so how we can write this one? Total energy equal to your kinetic in SHM plus your potential in SHM. I hope you understood. You can do. So kinetic energy we can write there. Right from here kinetic energy क्या आ जाएगी हमारे पास? 1 by 2 k a square minus y square plus your 1 by 2 k y square. See this one our kinetic energy. यहाँ पे क्या थी? kinetic energy ये है, और पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड की थी. हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? यहाँ पे के एम. बेटा इसको क्या कर सकती है फैक्टर? भी मैंने बताया के एम ओमेगा स्क्वायर वी कैन राइट देयर के ऑल्सो. ओके, दिस वन योर कांस्टेंट के इक्वल टू योर एम ओमेगा स्क्वायर. So as we are taking there, then adding both equation, then we can write like this one. So here came, open this one bracket, then after opening, then here we can write there 1 by 2 k y square plus 1 by 2 ky. Came this one equation. After this, then this one to this one. Here same side opposite, then here we can cancel. Here left 1 by 2 k a square. Okay, this one our total energy. क्या आ गई हमारे पास? टोटल एनर्जी. इफ यू वांट टू ओपन दिस वन k, so we can write this also here k को हम क्या लिख सकते हैं? m omega square. So as we know k equal to your m omega square. So here total energy we can write there energy equal to 1 by 2 m omega square a square. I hope you understood how we can find their total energy. First we will find their kinetic energy associated during the SHM, then we will find their potential energy during your SHM. After that we will find their total energy sum of your kinetic plus potential. Kinetic potential दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 by 2 m omega square a square. I hope you understood beta. So next we will do one question to find out the displacement, velocity and acceleration, how we can find. Okay, so first let here a particle oscillate with amplitude
5 centimeter and time period during oscillation is 10 seconds. Okay, so now write displacement and velocity during SHM. Okay, see this one question beta. First we have to check which terms are given in our question. So how we can find their displacement, velocity, acceleration. First see, in our question is given beta amplitude. First write the given terms which are given in our question. Amplitude आपको given है 5 centimeter. So here we can write their amplitude is 5 centimeter. Then time period during the oscillation is 10 second. Time period is given our 10 second. 10 second time period आपको given है. So the given, use this one your given time, 10 second is given, then write their displacement and velocity. First we will use beta general equation of the displacement. So as we know, general equation of the displacement हमें पता है क्या होती है, y equal to a sin omega t. इसी को यूज करते हुए उन्हें अपनी डिस्प्लेसमेंट लिखना है. सो ए इज एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी बट टाइम पीरियड इज गिवन. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द रिलेशन बिटवीन ईयर. इससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा निकालना पड़ेगा. रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड ईयर टाइम पीरियड. तो क्या रिलेशन होता है, ओमेगा इक्वल टू ईयर 2π/t. ये सभी रिलेशन आपको लर्न करने पड़ेंगे बेटा. ओमेगा इज इक्वल टू 2π/μ. This is the relation between angular frequency and linear frequency, and next year angular frequency equal to 2π/time period. टाइम पीरियड में ये रिलेशन होता है. तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन, टाइम पीरियड गिवन है. इसी रिलेशन को यूज करते हुए फर्स्ट ओमेगा फाइंड करना है. सो हाउ वी कैन फाइंड देयर ओमेगा इक्वल टू ईयर 2π एंड ईयर टाइम पीरियड क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है. सो राइट देयर 5. So use this one, then omega हमारे पास ये आ गया. Then here we will put this one value. So y we can write displacement कैसे लिखेंगे, y equal to 5 and here amplitude क्या given है, 5 given है. टाइम पीरियड आपको 10 given है. Time period is given here 10 second ना. So using this one here left here π/5 omega. So put here y equal to a is given amplitude 5 sin and omega t. ओमेगा अभी सोल्व किया हमने तो क्या आ गया, ओमेगा π/5. टाइम पीरियड को सोल्व करते हमने ओमेगा फाइंड किया. तो दिस वन आवर डिस्प्लेसमेंट. लाइक दिस वन वे वी कैन फाइंड देयर डिस्प्लेसमेंट. ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट, सी इन आवर क्वेश्चन हमने क्या फाइंड करनी, वेलोसिटी फाइंड करनी ड्यूरिंग एसएचएम, इसी एम्पलीट्यूड और आपके टाइम पीरियड को लेकर. तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे बेटा, इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वेलोसिटी इक्वेशन पता होनी चाहिए. सो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू a sin ओमेगा t. इसको यूज करते हुए हमारे पास वेलोसिटी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू, आफ्टर द डिफरेंशिएशन दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है. तो वेलोसिटी क्या मिलती है, y इक्वल टू a ओमेगा योर कोस ओमेगा t. अंडरस्टूड. तो इसी में क्या है, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, एम्पलीट्यूड की वैल्यू पुट कर देंगे. ओमेगा हमने निकाला था, क्या आया था, π/5 और एम्पलीट्यूड क्या गिवन है, 5 ओनली. सो वेलोसिटी इन योर एसएचएम, how we can write there, a came here 5 only and omega equal to your π/5. Then cos π/5 t. Then cancel this one. Then here left velocity equal to pi cos π/5 t. Okay, this one given in our centimeter. बेटा एम्पलीट्यूड किस में गिवन, हमारा सेंटीमीटर में गिवन है. तो यूनिट भी क्या रहेगी हमारी, सेंटीमीटर पर सेकंड. यू वांट टू कन्वर्ट देयर इन मीटर, देन यू कैन कन्वर्ट योर चॉइस. Okay, I hope you understood beta how you can find their velocity, acceleration. If further you want to find out their acceleration, तो हमने क्या है, acceleration की इक्वेशन पुट करेंगे. acceleration क्या होता है, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे velocity को, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, acceleration मिल जाएगा. डिफरेंशिएशन के लिए acceleration इक्वल टू योर dv/dt. t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आता है,
एक्सेलरेशन आएगी, तो एक्सेलरेशन क्या आती है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यही आती है एक्सेलरेशन हमारे पास। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ए एज इट इज, ओमेगा एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन क्या, कोस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी एंड ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर विल बी देयर, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, वाई बाई ए। ओके, तो हमारे पास वाई, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचता है हमारे पास, वाई बचता है। Here you can write with a differentiation. Here a omega as it is differentiation of this one d by dt cos omega t, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस कोस का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन ओमेगा टी एंड वन ओमेगा विल बी देयर, दैट विल बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से क्या है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इन सब की, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन आ जाएगी। सो पुट हियर एक्सेलरेशन विल बी देयर, एक्सेलरेशन ए विल बी इक्वल टू योर ए एम्पलीट्यूड इक्वल टू योर 5 सेंटीमीटर, ओमेगा इक्वल टू पाई बाई 5, क्या आया था हमारे पास, ओमेगा पाई बाई 5 एंड योर साइन पाई बाई 5 टी। So cancel this one, your square will be there 5, pi square divide by your 5 into 5, so 1 5 से 1 5 cancel हो जाएगा, तो इधर की क्या बचेगा, नीचे डाउन साइड your 1 5 will be there, so sin pi by 5 t. This one in centimeter also, that is centimeter per second square. Like this one we can find their beta displacement, velocity and acceleration in our simple harmonic motion. I hope you understood. Then in next class we will discuss our next topic. Then thank you for watching today our video.